What is data frame? Data frame is a data structure in Python Pandas. जैसे कि सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा है तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 2 इंडेक्सेस होते हैं, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स को इंडेक्स भी कहा जाता है और कॉलम इंडेक्स को कॉलम नेम कहा जाता है। Index can be numbers, characters or strings. यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म का डेटा है जिसमें A and B are the columns and 0 and 1 represents the row index and 10, 20, 30, 40 are the values. So let's see in Python ideally how do we create a data frame. So we will first write import Pandas as PD. Then we write the date. Then we create a data frame object, and it should be any valid identifier. So here I am taking one object equal to PD data frame. In data frame you have to mention the data frame function and the D and F letters must be capital. Then in bracket you can give the list as column and you can give the index equal to, for example, you can give characters as the index values. Now we will print this data frame object. So here is the data frame object created from columns and index values using list data type of Python.